Hello everyone. So in this video we are going to discuss about the very most important 50 MCQs on medieval Indian history. So very first question is, who was the founder of Delhi Sultanate? So its answer is Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak, a general Muhammad Ghori, established the Mulmuk slave dynasty, the first Delhi Sultanate. ओके कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को फाउंड किया था. ओके द सेकेंड क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम इन इंडिया. सो इल्तुतमिश जो थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था इक्ता सिस्टम इन इंडिया. इल्तुतमिश institutionalized the Ikta system where land revenue was assigned to officer instead of cash salaries. ओके कैश सैलरी ना देते हुए जो ऑफिसर्स थे उन्हें लैंड रेवेन्यू दिया जाता था. देन वेरी थर्ड क्वेश्चन इज विच सुल्तान कॉल्ड हिमसेल्फ शैडो ऑफ गॉड. कौन सा सुल्तान अपने आप को शैडो ऑफ गॉड कहता था? सो बलबन इज द आंसर. बलबन एम्फसाइज द डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप एंड कॉल्ड हिमसेल्फ जिल-ए-लाही, शैडो ऑफ गॉड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड द कुतुब मीनार. कुतुब मीनार किसने बिल्ड करवाया था? सो कुतुबुद्दीन ऐबक, ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार. कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था एंड इट वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश. फिफ्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली. फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली वाज रजिया सुल्ताना. रजिया सुल्ताना वाज द फर्स्ट लेडी, फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत. Sixth question, which ruler transferred his capital from Delhi to दौलताबाद. दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र करने वाला कैपिटल कौन सा रूलर था? सो मोहम्मद बिन तुगलक was that ruler. Okay, he shifted his capital to दौलताबाद to better control the Deccan, but later reversed the decision. The seventh question is, who introduced the price control measure. प्राइस कंट्रोल मेजर्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था मेजर सिस्टम, प्राइस कंट्रोल मेजर सिस्टम. टू सपोर्ट हिज लार्ज आर्मी ही फिक्स प्राइस ऑफ गुड एंड सेट अप द मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म. एट्थ क्वेश्चन, विच सुल्तान एस्टेब्लिश ए न्यू डिपार्टमेंट दीवान ए मुस्तखराज. किस सुल्तान ने इस डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने इस डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करवाया था एंड इट वाज सेट अप टू कंट्रोल टू कलेक्ट एरियर ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग हिज रिजाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज नाइन्थ क्वेश्चन, द मार्केट रेगुलेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. मार्केट रेगुलेशन सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? इट वाज अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस करवाया था एंड ही इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द मार्केट प्राइस टू प्रिवेंट इन्फ्लेशन. टेंथ क्वेश्चन, विच सुल्तान इंट्रोड्यूस टोकन प्राइस इन इंडिया. सो मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस करवाया था टोकन करेंसी इन इंडिया. ही इंट्रोड्यूस कॉपर ब्रास कॉइन टू सर्कुलेट लाइक सिल्वर, बट इट फेल्ड ड्यू टू forgery. Who founded the Mughal Empire in India? So Babur was the emperor who founded Mughal Empire. He defeated Ibrahim Lodi in first battle of Panipat in 1526 and established Mughal ruler. Then 12th question is Battle of Panipat 1526 was fought between. ये हम पहले ही क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि बाबर एंड इब्राहिम लोदी. This battle was between the Babur and Ibrahim Lodi. This battle marked the beginning of Mughal Empire in the India. Next question, the autobiography Tuzuk-e-Babari was written by. Who wrote this autobiography? So Babur brought his memories in the Chagatai language. बायोग्राफी लिखी थी. 14th क्वेश्चन, विच मुगल रूलर बिल्ट फतेहपुर सिकरी. किसने फतेहपुर सिकरी को बिल्ड करवाया था? तो इट वाज बाबर.
Babur built Fatehpur Sikri as his capital, and which later had to be abandoned due to water scarcity. Next question, 15th question, who abolished the जजिया टैक्स? जजिया टैक्स किसने abolish किया था? तो अकबर ने जजिया टैक्स को abolish कर दिया था. Okay, Akbar abolished this tax on non-Muslim to promote religious harmony. Next question, the mansabdari system was introduced by, mansabdari system introduced करवाया था अकबर ने. Okay, so a ranking system for civil and military official based on number of troop, okay, mentioned. Next question, 17, who wrote आईने अकबरी? सो आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो अबुल फजल. इट इज़ अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर, सोसाइटी ड्यूरिंग अकबर रीजन. अबुल फजल ने लिखी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर मैरिड नूर जहाँ. जहांगीर की शादी किससे हुई थी? नूर जहाँ से हुई थी. ओके, नूर जहाँ वॉज ए इन्फ्लुएंशियल क्वीन एंड हैड कंसिडरेबल पावर इन कोर्ट अफेयर ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, द पिकॉक थॉर्न वॉज बिल्ड बाय. पिकॉक थॉर्न किसने बिल्ड करवाया था? तो शाहजहाँ ने पिकॉक थॉर्न बिल्ड करवाया था, एंड सिंबल ऑफ मुगल वेल्थ. इट वॉज लेटर लूटेड बाय नादिर शाह ने इसको लूट लिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, 20, विच मुगल एम्परर कैप्चर गोलकोंडा एंड बीजापुर? सो औरंगजेब was the Mughal emperor who captured Golconda and Bijapur. He annexed this Deccan kingdom to explain Mughal territory. Next question, question number 21, who defeated Muhammad Ghori in the battle of Kadra in 1178? So Bhima II of the Solanki dynasty repulsed Ghori's first invasion. Next question, the Chola dynasty was known for. चोला डायनेस्टी किस लिए जानी जाती है? सो इट वॉज नोन फॉर मेरी टाइम ट्रेड्स, जहाज़ों से यहाँ पर ट्रेड किया जाता था. सो चोलाज हैड पावरफुल नेवी एंड एंगेज्ड इन ओवरसीज ट्रेड एंड एक्सपीडिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर किसने फाउंड किया था? ओके, फाउंडेड. सो हरिहर एंड बुक्का, दे इस्टेब्लिश द एम्पायर इन 1336 with the blessing of sage Vidyanarayan. Yeah. Next question, the famous Kohinoor diamond was taken away by. famous Kohinoor diamond कौन लेके भाग चुका था? That was Nadir Shah. He looted Delhi in 1739 and took the Peacock Thorn and Kohinoor. Next question, number 25, which dynasty built the Sun Temple of Konark? So Ganga dynasty built this Sun Temple in Konark in 13th century by King Narsimha Dev I. Next question, question number 26, Sher Shah Suri real name was? So Sher Shah Suri real name was Fardeen Khan, and he later took the title Sher Shah after killing a tiger. Next question, which battle marked the end of Delhi Sultanate? So Battle of Panipat 1526. Defeat the Ibrahim Lodi ended the Delhi Sultanate. ओके, यहाँ से बाबर ने मुग़ल एम्पायर की शुरुआत कर दी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अमीर खुसरू वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ. अमीर खुसरू किसके कोर्ट से रिलेट करते थे? सो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट से रिलेट करते थे. ही वॉज ए फेमस पोइट म्यूजिशियन ऑफ द दिल्ली सल्तनत. Question number 29, who introduced the Persian style of architecture in India? So Mughals ने introduce किया था Persian style architecture in India. So Mughal architecture blended Persian, Islamic and Indian style. Question number 30, which dynasty was known for building cave temple at Ellora? केव टेम्पल एट एलोरा किसने बिल्ड करवाए थे? सो राष्ट्रकूटास. द कैलाश टेम्पल एट एलोरा वॉज कार्व्ड अंडर राष्ट्रकूटा पैट्रोनेज. नेक्स्ट क्वेश्चन 31, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहानामी किंगडम? सो बहानामी किंगडम के फाउंडर कौन थे? अलाउद्दीन बहमन शाह. He founded Bahnami kingdom in 1347 and after revolting against Delhi Sultanate.
Next question number 32. The Battle of Talikota 1565 was found between. So it was found between Vijayanagar Empire and Deccan Sultanates, because this battle led to downfall of Vijayanagar Empire. Question number 33. Guru Nanak Dev was born during the region of. So Guru Nanak Dev was born during the region of Balor Lodi, and Guru Nanak was born in 1469 when Balor Lodi ruled Delhi. Who was the last ruler of Mughal dynasty? So Bahadur Shah II was the last ruler, okay, and also known as Bahadur Shah Jafar. He was deposed by the British in 1857. Question number 35. The Bhakti movement saint who propagate Nirguna Bhakti was. So Nirguna Bhakti was propagated by Sant Kabir, and Kabir emphasized devotion to formless God and rejected caste distinctions. Next question 36. Who founded the city Agra? So Sikandar Lodi founded the city Agra in 1504. Next question 37. The ruler known as Jagat Guru was. So Akbar earned the title for promoting universal religion, Dil-e Lahi. So he was named as Jagat Guru. Question number 38. The Mughal ruler shifted the capital from Agra to Delhi, Shahjahanabad. So Shah Jahan he built the city Shahjahanabad, now known as Old Delhi. Question number 39. The language promoted by Bhakti poet was. So the language promoted by Bhakti poet was vernacular language. Saint like Kabir, Tulsidas, Mirabai composed in local language for mass understanding. Question number 40. The first battle of Tarain was fought between. The first battle was found between the Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori in 1191. The second battle of Tarain, that is in 1192, led to. So it led to the establishment of Muslim rule in North India. Ghori defeated Prithviraj and paved the way for Delhi Sultanate. Question number 42. The ruler who completed the construction of Qutub Minar. Again, it was repeated question. So Iltutmish was the ruler who completed the construction of Qutub Minar. He completed the monument started by Qutubuddin Aibak. Next question. Question number 43. Who was the last ruler of Lodi dynasty? So Ibrahim Lodi was the last ruler of Lodi dynasty, and he was defeated by Babur in first battle of Panipat. Next question. Malik Kafur was a general under. So Malik Kafur was general under Alauddin Khilji. He led several campaigns in South India under Alauddin rule. Mughal painting. Question number 45. Mughal paintings style flourish during. So Mughal painting style flourished during Jahangir. So Jahangir had a deep interest in nature and portraits. Question number 46. Who was known as the second Alexander? So Alauddin Khilji was known as the second Alexander. He took the title Sikandar-e-Shani, meaning second Alexander. Question number 47. The famous traveler Ibn Battuta visited India during the region of. So he visited India. Ibn Battuta visited India during the region of Muhammad bin Tughlaq. He served as judge or Qazi in Delhi during Tughlaq rule. Next question number 48. The Sayyid dynasty ruled after. So Sayyid dynasty ruled after Tughlaq dynasty. Sayyid succeed the Tughlaqs and were later replaced by Lodhis. The tomb. Next question 49. The tomb of Sher Shah Suri is located in. So it was located in Sasaram. His tomb is an excellent example of Indo-Islamic architecture. The question number 50. The real founder of Mughal emperor was. The real founder of Mughal emperor was Akbar, and though the Babur founded the empire, and it was the Akbar who consolidated and expanded it across the India.